हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है प्रतीक ने। लेकिन वीडियो देखने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ दीप को, जो हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं और उनका एक चैनल है दीप आर्ट्स के नाम से, और वहां पर वो बहुत अच्छा आर्ट वर्क करते हैं। मैंने देखा है, मुझे बहुत पसंद आया है, और वहां पर जाकर प्लीज जरूर फॉलो कीजिएगा। उनके चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो जाकर जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब जाते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। टाइटल बताएंगे मौसम। टाइटल है माउथ वाटरिंग मुंबई फूड टूर, पारसी फूड, पानी पूरी, कबाब्स एंड अट्रैक्शंस इन मुंबई। और इस वीडियो पे मैं बताना चाहूंगी कि काफी लंबी वीडियो है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में देखेंगे। अगर आपको पहला पार्ट पसंद आया और आपने हमें सजेस्ट किया कि हम सेकंड पार्ट भी देखें, तो जरूर हम देखेंगे। लेकिन अभी हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। वीडियो टाइटल करिए लेकिन वीडियो देखने से पहले इस वीडियो के चैनल का वीडियो लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर को फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। I'm gonna take a piece of chapati and scoop up for my first bite. पता नहीं तो मजे का। Oh wow, that is amazing. नहीं, मिर्ची वाला नहीं था। Good morning everyone, it's Mark Wiens with migrationology.com in Mumbai, India. It is almost 9 a.m. This is our first day in Mumbai, and I have a list of a bunch of things, a bunch of places to eat and some attractions, some sightseeing to do, but really I find it really kind of hard to make a set itinerary when you don't really know how to navigate around. So we are just off to just walk around for a little while and see what happens today. Oh, we think it's a good thing, yeah. Our hotel is in the Kulaba area, but we're taking a little walk down the road or past a couple roundabouts to an area called Fort. One of the things I love about India and that I remember from my previous trips to India is that even in the huge cities, the congested huge cities, you can still always hear the birds chirping in the trees. That's pretty awesome. And all of a sudden it looks like it's gonna downpour. Even the birds are flying away. Oh, okay, it's starting to rain right now as I'm talking. We didn't get that far, or we didn't get anything accomplished, but it has started raining. So far, walking around this area is really nice. What I really like are all of the trees. So many trees, and then just like kind of decaying old buildings, but it's beautiful to walk around this area. Luckily, the rain didn't last very long. And so we are walking now over to one of the main train stations, which is known in brief as CST. रेलवे स्टेशन सब प्यारा लग रहा ना। The real name is Chhatrapati Shivaji Terminus, which I am reading from up here. But the old name is VT, which is Victoria Terminal. And there are just masses of people. It is like a humidity steam bath in Mumbai right now after that rain. मैंने हमारे स्टेशन पे कभी इतना रश नहीं देखा भाई। We're gonna stop right here for charging. One tea. Okay, चाय। वहाँ से आइए तो Thank you. I think tea is national drink of India. Oh, ग्लास ले लो भैया, ऐसे ग्लास मैंने भी घर में ला कर रखे हैं। चाय पीती करते हैं। Okay. Thank you very much. One of the absolute best joys of being in India is drinking chai. And you just walking down the streets, there are tea stalls everywhere you look. They brew it fresh and they add milk in it, and then they squeeze out the tea leaves, and then they serve it to you just in small cups. And it's always piping hot. It's actually like burning hot. My fingers are on fire right now.
Oh, I have missed you. Oh, that's wonderful. It's strong tea. You can taste just a hint of spice in there, and maybe a little bit of cardamom in there, and then it's creamy. It's just fantastic. There's just nothing greater than standing along the side of the street drinking a cup of chai. वैसे मुझे cardamom से ज़्यादा ginger अच्छा लगता है ज़्यादा. Yeah. Drinking cups of hot tea on the side of the road is just one of the great joys of being in India. Oh, it's so good. It's such a simple, fantastic thing. We are now walking to try and find a very legendary restaurant in Mumbai. I think it's right there. How are you? We're fine. You From Thailand. Thailand? Yes. This is my friend. My friend. Okay, good, good. Hi. Why you came here? Just traveling and eating. traveling. Came to eat. Okay, Indian food. Okay, Britannia. Is it open yet? Yeah, just now. Okay, Britannia. Nice to meet you. When I asked for restaurant recommendations in Mumbai, Britannia and Company was one of the top recommendations. So I am here. This restaurant is famous for serving Parsi food, which is a combination of Iranian, Persian food and Indian food. And so this is a type of cuisine that you have to eat when you are in Mumbai. Also, we got here kind of right as they opened, so we beat the lunch rush, but I'm sure in maybe an hour from now when the offices are let out, this place is going to be packed. And our first dish has just arrived. I also got a fresh chapati. Oh, you can feel how fresh and it's kind of like dense but fluffy at the same time. And scoop up for my first bite. Oh wow, that is amazing. That mutton is kind of like stringy, and then the flavor that's wrapped up in it. But the like blend of spices in there, I'm not even totally sure what is all in there. But wow, it's flavorful. And it's really not, it's kind of watery as opposed to buttery or oily, which is really nice. And then all those little fried crispies on there, they kind of add an extra texture dimension. It's not so strong like an Indian curry, but it has a little bit of a milder taste to it, but incredibly good. I'm going to add some of these onions though. These onions are very tempting. Oh, and a wedge of lime. This might give it the added boost of like fresh crunch to it. Not that it needs anything extra, but I'm just kind of an onion kind of guy. Okay, that's a lot of onions. Me too. Wow. It's such an amazing blend of spices and meat. I also don't want to pass up this opportunity to mention how good the chapati is. The chapati is like kind of gooey, but then it's light and just it actually is really, it's an amazing chapati. Thank you very much. I didn't even notice this at first when I sat down at the restaurant, but something I have to point out to you is this bouquet of napkins. Oh, nice. What a beautiful stack. I'm gonna grab one off the top here. And then also on the napkins, that is my kind of a phrase. The other dishes that we ordered have arrived, and one of the dishes that this restaurant is very well known for is their berry pulav. And pulav is it's similar to biryani, not quite the same, actually quite different. But they're famous for serving a berry version, and I think the berries are like Barberry, Iranian dried fruit. Oh, okay. Okay. Barberry. Okay, they are called barberries, and they look kind of like very small raisins, very dried up or little black currants. And then also on the top there were a bunch of fried shallots, and then we got the one with chicken. Oh, that's a big nugget of chicken. Well, let me just taste, making sure I got a lot of those berries in there. It's so fragrant. And those little berries, they kind of have a sour taste to them. It's not really very strong in flavor.
but everything really just harmonizes together. And then the final dish we got is something called dansak, which is the Parsi version of lentils. And we got the mutton version, so there's chunks of mutton in it as well. And then it's served with this big plate of rice, which is some kind of spiced or fragrant rice, as well as a couple of, I think these are mutton meatballs. I'll put some of the rice down as the base. And then go for some of the dansak. Oh, and those are big chunks of mutton. I just want to taste that dansak actually first. There's some kind of very unique spice in there, like maybe fenugreek, but it has a very unique, distinct spice to it. Parsi's inside is the green chili, red chili also. I was thinking there was some kind of spice in it, but I just asked the waiter and he told me that it's both green chili and red chili in there that gives it the flavor, and then it's just the lentils, so it has kind of that lentil grainy texture to it. Piece of that mutton. Oh yes, tender mutton. That was some really good food. Caramel and one of the custard. things that also is highly recommended here that I think just about everybody who eats here orders for dessert is the caramel custard. And I don't really have a sweet tooth, but I have to try it. बहुत मजे का होगा। देखो। Wow, it's almost like cream cheesy, just lightly caramel flavored. And then sweet, not like silky soft smooth, but kind of like airy smooth. Yeah, that is very good. It's kind of like a stiff pudding. And old man. Okay, Very nice. They had been to Mumbai 2 months ago, and they invited me to Taj Mahal. Oh, okay. So I went and met them over there. Okay. 1,200 years ago. The Persians fled Iran and they landed on the shore of हाँ ये तो हमें Mumbai. पता है। And so the Maharaja here gave them support and gave them help. So they stayed here. So they adopted Parsi culture, Hindu culture. And that is called Parsi culture, Persian Makes me with Hindu. They were Zoroastrian. Zoroastrian. They were Zoroastrian. Our prophet's name is Zoroaster. Oh, okay. And we are called Zoroastrian. But Indian. When we came to India, the Indians called us Parsi. Parsi. The Parsi food is a combination Yeah, of. So you have a combination of Persian and Indian food here. Okay. The berry. Did you have the berry? Yes, we had the chicken berry. So it's a Very nice. combination of Parsi, Indian and Persian. Just finished our meal at Britannia and Company. The food was incredible. I especially liked the वैसे berry इतना महंगा pulao, तो नहीं था। the rice चाट, dish with those हाँ। berries on top, and also that Items. saliboti was just Saliboti. unbelievably good. What really makes this restaurant like a heritage and just a beautiful place is because of the owners and the history of the restaurant. The owner, he is 94 years old at the time of making this video, and he is up and around talking and greeting everyone eating at the restaurant, telling stories. He'll definitely tell you some stories, but he's an extremely nice man, and he's really an inspiration. Hello, Baikula. Okay. Lunch was extremely good. I am stuffed, so we decided to jump into a taxi and we're on our way to go visit a museum next.
We drove all the way to a museum called Dr. Bao Daji Museum, but unfortunately today they're closed. Oh. Even though the opening hours said they were open today, but they said today it's randomly closed. So instead we're gonna drive over to the Gandhi Museum. Okay. Something that will never get old or boring is looking out the window while driving around in India. There's just so much action happening everywhere you look. It just started downpouring again. It will like downpour for a few minutes and then just kind of drizzle for a while, and then it will downpour, and then it will stop, and then it will downpour again. Lots of people. This is the biggest laundromat. As we were driving on our way to the museum, our taxi driver, who is very kind, stopped here at Dhobi Ghat. And Dhobi Ghat is Mumbai's largest open-air laundromat. We're gonna go down the stairs to the bottom of the laundromat and just take a quick look. You kind of gotta walk around the outside, but I think this is the main entrance. Hello. It's not too busy right now. Maybe it's the time of the day that we're here right in the middle of the afternoon. But this is like an entire community, an entire village that washes clothes, and there are just pools of water. मूवीज में बस तो पूरा सेटअप लगाया We can only stay here for a few minutes because our taxi driver is waiting on the bridge for us, but it's really interesting to walk around. This is just an entire, oh, be careful. You gotta be careful where you're walking or you will end up in the laundromat. But it's very interesting to see, and this is Mumbai's largest open-air laundromat. Maybe one of the largest open-air laundromats in the entire world. Hello. Hello. How are you? You can be careful. Sorry. बात करेगा आज इस वीडियो की, तो मुझे तो वैसे बहुत अच्छी लगी जिस तरह वो जो है ब्रीफ करते जा रहे हैं और साथ में जो है जो फूड वो खा रहे हैं उसकी भी वो जो है पूरे तरीके से जो है वो डिटेल बता रहे हैं। मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे फूड व्लॉग्स देखे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने सिटी को इस तरह से नहीं देखा। लेकिन आज इस तरीके से हम लोग मुंबई की रोड्स देख रहे थे, लोगों को देख रहे थे, तो वो देखकर मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था कि खाने के साथ साथ हम शहर को भी देख रहे हैं। बट वाकई में जो हम लोगों ने दो चीजें, अभी तो इस वाले एपिसोड में हम लोगों ने दो चीजें ही देखी हैं। एक हम लोगों ने सबसे पहले चाय देखी, और चाय वैसे मेरा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ बाहर से ऐसे ठेलों से पीने का, मौसम का शायद हुआ हो एक दफा, लेकिन डिस्पोजेबल में। हाँ, लेकिन ये कि मुझे, क्योंकि मैं अक्सर मूवीज में देखती थी या वीडियोस में देखती थी कि ऐसे कप्स जो से हैं वो इंडियन मूवीज में यू नो जैसे ही रोड साइड पर खड़े होकर चाय लोग पीते थे, तो मुझे बड़ा पसंद आता था। तो मैंने भी अभी इस तरह के ग्लास, इन्होंने कहा बाहर जाके तो नहीं मैं पी सकती, मैं घर ही ले आती हूँ। सबसे अच्छा घर में आप पिए, तो मैं वो ग्लास लेकर आई, मैं उसमें चाय पीती हूँ अक्सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीजें यू नो बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं कि जब मुझे लगता है कि जो बाहर से एक लोग आए होते हैं उनके लिए शायद ज्यादा ये चीजें अट्रैक्शन वाली होती हैं, और हम लोगों के लिए होता है कि भाई अभी जैसे हम लोग को फूड का ब्लॉग देखते हैं तो हम लोग को बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है क्योंकि हमारे लिए भी ये चीजें नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे मैं ये बात करना चाहूंगा, जैसे इन्होंने भी बात की जो है अभी नहीं वीडियो देखते हुए इन्होंने बात की थी रेलवे स्टेशन की, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ट्रेन भी आई हो ना तो हमें तब भी इतना रश देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे इतना रश नहीं होता, हालांकि ट्रेन आई हो तो फिर भी इतना रश नहीं मिलता। हाँ, और जैसे कि चाय के बारे में हम बात करें तो चाय बहुत सारे लोगों की जान होती है भाई। और भाई मैं अगर बात करूँ ना सर्दियों में, वैसे गर्मियों में तो सिर्फ एक कप पीता हूँ, लेकिन सर्दियों की बात करूँ ना 3-3, 4-4 कप दिन के मेरे लग जाते हैं। भाई तो कॉफी भी पीता, ब्लैक कॉफी पीता, और अक्सर जब वीडियोस बना रहे होते हैं ना तो ये एक कप ब्लैक कॉफी का होगा इसके हाथ में। मैं
तो कहते पता नहीं क्या ये एडिक्टेड हो गया इस चीज का। ब्लैक कॉफी मैं अलग पीता हूँ, पेशावरी कहवा अलग पीता हूँ, फिर 4 कप जो है ना चाय के वो अलग पीता हूँ। गर्मी हो जाएगी, बस कर दे ना पीता। बस ये सर्दियों में पीता हूँ, गर्मियों में नहीं पीता। हाँ, लेकिन गर्मियों में पी ही नहीं जाती मेरे से भी, चाय नहीं पी जाती गर्मियों में। सर्दियों में हाँ, मैं अभी वैसे 2 कप पीती थी, अब मैंने 1 कप कर दिया उसको भी। एनीवे बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। और जो फूड की बात करें तो फूड वाकई बहुत टेस्टी लग रहा था। खासतौर पर अगर मटन की बात करें ना, वो मैं कहता जिस तरह उन्होंने उसमें वो कांटा लगाया और वो अलग अलग हो गया। कांटा लगा, अरे यार अब वो मैं क्या उससे फोक यार वो अब पंजाबी में कहते हैं गालना। अच्छा नहीं, तुमने कहा ना कांटा, वैसे कांटा लगाया तो उसके साथ वो उसके हिस्से नहीं कर लिए। गला बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा था। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोगों नहीं समझ रहे, लेकिन मेरे लिए नई चीज ये थी क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था कि जो पारसी फूड है उसमें बहुत ज्यादा, मतलब अब अगर मैं जितनी भी हम लोगों ने फूड आइटम्स देखी हैं वो ज्यादातर पर्शियन और इंडियन मिक्स हैं। वो तो मुझे पता है, लेकिन ये है कि वो नॉन वेज ही ज्यादातर, ये मैं बात करना चाह रही क्योंकि पहले बोल देती थी, गैप जरूर लेना था। मैंने 1-2 दफा और भी वीडियोस देखी हैं, उसमें भी मैंने मतलब ये चीज देखी थी कि ज्यादातर नॉन वेज की तरफ, आई डोंट नो, मे बी वेजिटेरियन भी बहुत ज्यादा हूँ, लेकिन जो मैंने फेमस फूड देखा है पर्शियंस का वो ज्यादातर यही है। एनीवे, और इसके बाद हम एंड पर आएंगे भाई जी धोबी घाट की, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया। और उसकी रीजन ये कि मैंने कभी रियल लाइफ में नहीं देखा, आज भी वीडियो में देखा, बट ये इतनी डिटेल में हम लोगों ने नहीं देखा। बाकी रियल लाइफ में अभी तक हमने धोबी घाट नहीं देखा ना भाई। MBBS में देखा है, सर्च करना पड़ेगा कि लाहौर में धोबी घाट है कि नहीं। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने अपनी वो जो लॉन्ड्रीज है वो अपनी अपनी बनाई हुई है। पहले तो होता होगा ना, मुझे नहीं आइडिया। लेकिन वैसे ये कि जैसे हम लोगों ने मुंबई को देखा ना, बहुत ही डिफरेंट। मुझे पता है वैसे कैसी वाली, मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे देखकर फीलिंग आई जैसे लोग स्टेशन से बाहर आ रहे थे, जैसे हम लोग देखते हैं ना यूके वगैरह को देखते हैं या अमेरिका को देखते हैं, वहां पर लोग वेट कर रहे होते हैं एक साइड पर, उनके एक सिग्नल का इंतजार होता है और फिर लोग चलते हैं, गाड़ियां रुकती हैं, तो कुछ इतना बिजी वाला मुझे लगा है। अच्छा, मैं बात करने लगा था कि वैसे तो धारवी जो है वो एक स्लम एरिया कंसीडर्ड किया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो स्लम एरियाज है मुंबई के खासतौर पर, उसमें जिस तरह का बिजनेस हो रहा है ना, वो वाकई आउटस्टैंडिंग है। क्योंकि वहाँ पे बैग्स बन रहे हैं, वहाँ पे पर्स बन रहे हैं, वहाँ पे लॉन्ड्री का काम हो रहा है और भी बहुत सारे कारोबार हो रहे हैं। आप ये देखो कि वो कितना ज्यादा, मतलब GDP में कितना ज्यादा वही ना, वो एक नाम का स्लम है, लेकिन मुझे लगता है वहाँ पे जो कारोबारी लोग होंगे वो अच्छे खासे यानी कि वहाँ पे अर्न करते हैं, बिल्कुल। वेल ओवरऑल काफी मजा आया, लेकिन इसका सेकंड पार्ट भी मैं जरूर देखना चाहूंगी, क्योंकि उससे एक तो हम लोग डिफरेंट फूड भी देखेंगे और साथ में शहर भी घूमेंगे। वैसे में पता नहीं क्या आज हो रहा है, क्योंकि मैं धोबी घाट को गोभी घाट बोल रही थी यार, अभी खैर यू नो स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, पता नहीं क्यों भाई। वेल इसी के साथ मैं इजाजत, वीडियो लाइक, हमारे चैनल पर वीडियोस एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।